गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शोमी। सो गाइस, बहुत दिन बाद मैं वीडियो कर रही हूँ एंड आज बहुत दिन बाद जो वीडियो कर रही हूँ वो वीडियो आप सब लोगों की पसंद की वीडियो है। मैं आज हेवी हेयर ऑयलिंग करूँगी एंड वो भी ये पैराशूट कोकोनट ऑयल को यूज़ करके। ये ऑयल को यूज़ करके हेयर ऑयलिंग, पैराशूट कोकोनट ऑयल से हेयर ऑयलिंग की रिक्वेस्ट में मुझे बहुत दिन से मिली थी, तो मैं फाइनली आज ये कर रही हूँ। सो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड गाइस, अगर आप अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, विंटर सीजन स्टार्ट हो गई है एंड विंटर सीजन में हेयर एंड स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, आप लोग तो जानते ही हो, एंड साथ ही साथ डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाते हैं। सो कोकोनट ऑयल यूज़ करने से आप ये सब प्रॉब्लम प्रिवेंट कर सकते हो। सो विंटर सीजन में कोकोनट ऑयल को ज़रूर वीक में 1-2 बार ट्राई कीजिए। एंड अगर आप स्टार्ट कर रही हूँ। मैं इस ऑयल को अमेज़न से परचेस किया था। अगर आप इस ऑयल की फुल रिव्यू देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखो, मैं इसकी रिव्यू ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसकी एक स्मेल है जो मुझे बहुत ही पसंद है। बहुत ज़्यादा थिक कोकोनट ऑयल नहीं है। एंड ये बहुत ही अच्छे से, देखिए, एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्कैल्प पे।
पे ऑयल अच्छे से अपने हेयर में अप्लाई होते हैं, रूट से लेके एंड तक।
पे एंड करती हूँ। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।